सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हाल में ही न्यूज़ है कि इनफैक्ट न्यूज़ क्या है, बहुत चल रहा है यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया, और इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है। एंड कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गेमर्स एंड पीसी बिल्डर्स के दिमाग में ये है कि विल पीसी पार्ट्स गेट मोर एक्सपेंसिव because of this? It's a valid question. To be very honest, it's not a simple yes or no. Actually, tariffs की वजह से तो महंगे नहीं होंगे, but हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले महंगे है ही क्यों. Like recently, there was this article. I mean, it is a Reddit post which became a news article. One chap flew down to Vietnam. वहाँ पे he bought a MacBook and then came back. It costed him just 5,000 more than buying just the MacBook in India. He went there, stayed in a hotel, had a nice 7-8 day vacation, and he came back just for 5,000 extra bucks. So that really makes you think whether you should even buy a MacBook in India. जाओ वियतनाम हॉलीडे बना के आ जाओ ब्रो, दैट्स इट। मैं गया वियतनाम की टिकट बुक करने। So when we look at these computer parts, we think कि इस पे तो भारी कस्टम ड्यूटी लग रहा होगा और इसकी वजह से ये सब महंगे हैं। Not exactly. Now, India is part of WTO Information Technology Agreement, जिसकी वजह से ज़्यादातर कोर कंपोनेंट्स पे लाइक CPU, मदरबोर्ड, RAM एंड SSDs, इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी इज एक्चुअली जीरो। जीरो 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 जीरो। कौन है इसका असली विलन? That's a great question. Now, the real villain actually is GST. I mean, if you can call it a villain, that is. The main reason for the price difference, yes, is IGST, Integrated Goods and Service Tax. सीधा 18%. Here's hoping कि GST reshuffle में ये 5% पे आ जाए. One can hope. This is a non-negotiable, by the way. और ये 18% component की original price पे नहीं लगता. It's calculated on, you know what? The component price plus the shipping cost plus the insurance that you do while shipping it. उसकी पूरी वैल्यू पे 18%. इसको कहते हैं CIF. सोचो अगर यूएस में एक GPU $400 का मिल रहा है तो सिर्फ IGST की वजह से वो सीधा 7 से 8,000 रुपये महंगा हो जाएगा. एंड दैट्स बिफोर इट इवन रीचेस द रिटेलर. ये एक्चुअली सबसे बड़ा परमानेंट टैरिफ हो जाएगा. बट या आई मीन कम्स द डिस्ट्रीब्यूटर, कम्स द रिटेलर, देन कम्स द फाइनल सेलर. सो अब आते हैं गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया पॉलिसीज पे. इसमें दो पार्ट्स हैं. वन द कैरेट, गाजर, द PLI स्कीम. नाउ गवर्नमेंट हैज पुट नोटिस टू डेल, HP, Asus कि वो इंडिया में लैपटॉप्स और प्री बिल्ड्स बनाने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं. और दूसरा है द स्टिक, यानी कि लाठी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस. आई मीन there was a recent notification, actually multiple ones, that if you want to import laptops and servers in India, you need a special license. ये exactly ban नहीं, but this is kind of an extra step to push all these big name brands to manufacture locally. But इसमें हमारा क्या फ़ायदा? You know, the problem is ये सारी schemes complete systems के लिए हैं, not just for single cards or motherboards or even that latest processor for AMD. ये किसी भी चीज़ में PLI स्कीम में नहीं आती है. तो हमें शॉर्ट टर्म में सिर्फ इंपोर्ट की मुश्किलें मिल रही हैं, सस्ते पार्ट्स का फ़ायदा नहीं. बट इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. दैट विल बी सो कूल, राइट? हम इंडिया से बाहर निकलते हैं क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ ग्लोबल प्रॉब्लम. फर्स्ट, प्राइसेस वर अप बिकॉज ऑफ क्रिप्टो माइनिंग. आज प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ AI. NVIDIA and AMD classic sell the shovel to the gold miners, right? Yeah. NVIDIA की रिपोर्ट में this quarter 23% of the revenue is by one customer. They didn't name the customer, but most likely it's something like Supermicro or somebody who's assembling their servers. Yeah. Most likely. So do you think if the AI bubble bursts, we should see a reduction in graphic card prices? No, I don't think so. Competing product is so far away. Like so far away. अगर तुमको 5080, 5090 की जितना compute even graphics के लिए चाहिए या whatever AI के लिए चाहिए, why will they reduce price? Yeah. They're a business after all, ना मतलब. Well, it's like they gotta keep the shareholder thing going, right? Also, it's not like AI गायब थोड़ी हो रहा है. It's like probably the pace will slightly slow down. I don't think so. The FOMO is so hard, bro. Yeah, See, exactly. Imagine like the biggest companies in the world have this FOMO now that they want to keep buying GPU chips. Yeah. In fact, because these big companies are buying those chips, they are not giving production to desktop level chips. Yeah. Chill है मतलब. RTX Pro Blackwell has like 1 month waiting period, 2 month waiting period. That kind of stuff is already going on. It's already happening. तो H200 तो दूर की बात है. Like forget about H200 and all. We have shipped H200 systems, by the way. Instagram पे भी post है. So yeah, all these big companies जिनके AI chips लाखों में बिकते हैं, they have practically no incentive to build you a cheap gaming card, right? I mean, why try, right? इसलिए वो हमारे consumer GPUs का प्राइस भी बढ़ा के रखे हैं.
because these consumer GPUs, believe it or not, are used for AI. So it's kind of an invisible AI tax going around across the globe. इसलिए हर नई generation महंगी आ रही है. Remember 3060 Ti launched around like sub 40,000 levels. 4060 Ti went above 40,000 levels. Same tier, 5-6 हज़ार रुपए ज़्यादा. Even That's not even 50 is coming, no? 5050 is come, but Has come. nobody's talking about 5050. Do you wonder why? We should talk about विवाद हो जाएगा. So back to our original question. Will tariffs affect PC pricing? So any new tariff can have some impact. For PC builders, the story is much deeper. हमारे लिए the biggest tariffs are already in place. Because देखो tariff तो India लगाएगी नहीं. They want to keep importing laptops, they want iPads, they want all of these things. तो tariff तो लगने वाला नहीं है इंडिया में. Because eventually, if Indian government puts a tariff on this, it's more expensive for you. So it's not happening anytime soon. And since we get everything from China, and China and India are fresh new buddies, I don't think that's happening. But the villain is already in place. The GST, 18%. Digital India के लिए I think it should be 5%. And yeah, the new global tax, the AI tax. And of course, the policy paradox. Like Make in India जिसका फायदा actually enthusiast PC builders के लिए actually नहीं है. तो आप क्या कर सकते हो? Oh yeah, आप क्या कर सकते हो? वियतनाम चले जाओ. Be patient, every new generation is coming expensive. Wait. If you can't wait, buy or hunt for sales, online events and budget realistically. Now US prices देख के खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमेशा think of it as a 15 to 30% premium अपने बजट में ऐड करके चलो. This is 2025 की reality. आपका क्या सोचना है इस बारे में? Let me know in the comments below. And yes, don't forget to like, share and subscribe. Do let us know what you think about this video. अगली वीडियो में मिलते हैं. Thank you for watching.